Good morning and namaste, friends. Welcome to this session. I am your astrologer friend, Rajiv Nath, back with you. And as I've already, announced in my last video, which I posted some 2-3 days back, that I'm going to conduct 2 introductory classes free of cost, no charges for that. That is, one class is today on 14th of May 2022, today at 8:30 p.m. IST. And another class tomorrow, that is 15th May 2022 at 8:30 p.m. IST. And these are basically, to announce my new batches that I am starting for both Vedic as well as KP. I have not written in the last video. I had written for both Vedic and KP, and to give you an insight into what आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ. पिछले वीडियो में आई थिंक दिस थंबनेल जो मैंने डाला है, ये शुरू में सिर्फ ये एक्चुअली थ्रू आउट द वीडियो नहीं था. तो दैट इज व्हाई आई गेस थोड़ा सा रिस्पॉन्स हमारे पास कम आया है. And today being a Saturday, a holiday, I thought, I'll just post it again by way of reminder. And all of you are welcome to join. मेरा टेलीफोन नंबर नीचे दिया हुआ है. द फर्स्ट टेलीफोन नंबर is my WhatsApp number. The second one is my other telephone number. आप लोग, if you are interested in joining, please introduce yourself to me over WhatsApp and send me your email ID also, so that I can send you the link for the introductory class meeting के लिए मैं आपको link भेजूंगा. Link I will send only at 8 p.m. IST, not before that, because what happens is, if somebody joins, I can send you the link right now also, but if somebody joins, before somebody joins and the class doesn't start, then your link, the meeting is over. Zoom treats the meeting as over after 40 minutes. So that is why I will send the link to you only at 8 p.m. 8 बजे शाम को मैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लिंक आपके पास भेजूंगा. So I have deliberately chosen this time 8:30 बजे IST 8:30 p.m. because it is, and today being a Saturday, mostly लोगों को छुट्टी होती है. Otherwise also in India, people are back from work, and overseas states में और Canada में कुछ students हमें शायद आज join करेंगे. So it will be morning or afternoon and a holiday. So Saturday would be starting then. आज जब यहाँ रात होगी तो USA और Canada में Saturday will be starting. So, and places like I have some students from Vietnam and Cambodia and Thailand. तो वहां पे करीब रात के 10 बज रहे होंगे. So it's not too inconvenient for anyone. So all of you are welcome, who is watching this video, and I've posted personal messages to my broadcast group, which comprises of about 2 to 300, between 2 to 300 people. So actually it's my fault. I was off YouTube and off astrology, in fact, for the last 7 to 8 months, because of some personal issues which I have already been, I have already informed all my viewers and my students earlier. Anyway, so I'm starting again, and I plan to start 2 batches, one for Vedic and one for KP. And that's what I'm going to talk to you about, and take your feedback and what you expect from me. आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या आप कैसे सीखना चाहते हैं, आप कितना जानते हैं, है ना, कहाँ, where you stand, so that accordingly I can design my classes and deliver in the best possible manner to you. तो एक छोटा सा मैंने ये तो आप लोगों ने, आप इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, ये इसमें आप टाइम नोट कर लीजिए. यू सेंड मी योर ईमेल भेजिए, क्योंकि लिंक मैं 8 बजे ईमेल पर ही भेजूंगा. फॉर दोज हु वांट टू जॉइन, आई विल सेंड अ जनरल लिंक आल्सो टू यू, बट बाय ईमेल ज्वाइन करने से वो ऑटो ज्वाइनिंग हो जाता है. एनीवे, सो एक हमने डेमोन्स्ट्रेशन
के तौर पे एक छोटा सा वीडियो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक मैरिज का केस है, नेटिव है, किसी की मैरिज है जो कि ही इज 37 years old and still not married. So how his horoscope justifies both through Vedic as well as through KP. वो एक छोटा सा, not that you, if you are not an astrologer or if you don't have complete knowledge, you may not follow the video पूरी तरह से. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तब तो आप फॉलो करेंगे, बट एक नमूने के तौर पे हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इन बोथ वैदिक एंड केपी एंड व्हाई Vedic is as important as KP. I will not, at the cost of repetition, last video में मैंने बहुत emphasize किया है why you need to learn Vedic also before graduating to KP. So anyway, without wasting further time, मैं वो एक राइट अप हमने बनाया है जिसको मैं खोल रहा हूँ एंड चलिए उसको लेकर के हम बात करते हैं. You see now here, yes, ये देखिए, this is a write up on delayed marriage. देखिए अभी आपके सामने ये visible to you by now. See, I have written delayed marriage analysis through Vedic and KP. See how I am going to teach you. हॉरोस्कोप वही है, वैदिक से कैसे प्रेडिक्शन होता है, केपी से कैसे प्रेडिक्शन होता है. तो ये पहले मैं वैदिक के थ्रू आपको एनालाइज करके, और प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे पास अभी अभी एक हफ्ता पहले ये केस आया है, ठीक है, एक हफ्ता पहले ये केस आया है एंड आई हैव गिवन एवरीथिंग. ऊपर आई इनवेरिएबली चेंज द नेम्स, नाम मैं बदल देता हूँ, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर देखिए, आई हैव गिवन एवरीथिंग हियर. I have given everything here. You see, the name is given, date of birth is given, time of birth, place of birth, everything is given. So if you want, you can put it in your own systems and keep it for record and analyze it. अपने हिसाब से कर सकते हैं. तो let's see now analysis through Vedic. ये देखिए आप, ये राशि चार्ट है मेन जो वैदिक में हम लोग फॉलो करते हैं. भाव चार्ट नहीं फॉलो करते हैं वैदिक में. और ये नवांश है, D9 जिसको बोलते हैं. So rules for marriage. Now, the system that we follow, that I teach and I follow, is, उसके अंदर it is called the systems approach. Okay, उसमें मैंने अपने थोड़े से कुछ मॉडिफिकेशंस हल्के से किए हैं. वो हमारे गुरुजी श्री वी.के. चौधरी का सिस्टम है जो बहुत, it is a very uncomplicated and simple approach to Vedic astrology. उसमें आप भटकेंगे नहीं. Anyway, we'll talk about that later in the class today. So rules for marriage, we'll just study this horoscope. The prime determinants or significators for marriage in any horoscope are as follows. Number one, the lord of the seventh house with a मूल त्रिकोण राशि. अगर सेवेंथ हाउस में मूल त्रिकोण राशि है हॉरोस्कोप में, तो उसका लॉर्ड जो है प्राइम सिग्निफिकेटर होता है. इफ देयर इज नो मूल त्रिकोण राशि इन द सेवेंथ हाउस, देन द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस में फिर अगर कोई मूल त्रिकोण राशि है तो उसका स्वामी, द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज. If there is no multikon in the seventh and second houses also, then the lord of the fourth house with a multikon rashi becomes the primary determinant. PD matlab primary determinant. And if there is no multikon rashi in the seventh, second and fourth houses, then the lord of the eighth house becomes the prime determinant. अगर second, seventh और fourth में भी कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो लॉर्ड ऑफ द एट्थ हाउस विद मूल त्रिकोण राशि वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज बन जाता है. ओके. नंबर 6, जुपिटर इज द सिग्निफिकेटर फॉर हस्बैंड इन अ फीमेल हॉरोस्कोप. एवरी फीमेल हॉरोस्कोप में, हर एक फीमेल हॉरोस्कोप में जुपिटर इज द कारका फॉर हस्बैंड. ओके. एंड वीनस इज ओवरऑल सिग्निफिकेटर फॉर मैरिजेस इन ऑल हॉरोस्कोप्स. शुक्र जो है हर एक जन्म पत्री में, इट इज दी ओवरऑल कारका, वो शादी का, मैरिज का कारक होता है ओवरऑल. मैरिज कॉमा टाइमली और डिलेड, denial of marriage, married life depends on the strength or weaknesses of these houses and their lords. Planets connected with these houses or placed therein are also capable of blessing the native with marriage during their दशा. ओके. तो ये जनरल रूल्स है मैरिज के. हम जिस वैदिक पद्धति को फॉलो करते हैं उसमें ये रूल्स हैं. बाकी तो जब आपके साथ क्लास करेंगे तो और डिटेल में जाके हम बताएंगे. अब इस हॉरोस्कोप पे हम आते हैं. अच्छा, और दी नवांशा दैट इज D9, ये नीचे जो है
is invariably to be seen, especially if the significators oblique determinants are strong in the D1. अगर मेन राशि चार्ट में अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि मैरिज गिविंग हाउसेस या प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग और प्रॉमिसिंग है, तब तो हमें नवांश देखने की आवश्यकता, इट इज अ मस्ट. ओके, इट इज इम्पेरेटिव दैट वी सी दी नवांशा. ठीक है, अगर वो वीक है तो नवांशा देखने की उतनी आवश्यकता नहीं है. दैट वी विल स्टडी जब हम डिविजनल चार्ट्स पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये मैं डेमो वीडियो दे रहा हूं आपको. ओके, नाउ इस चार्ट में देखिए, द सिग्निफिकेटर फॉर मैरिज in this chart is Venus, the prime significator or the prime determinant. Why? And because it is the lord of the second house. Seventh house में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो second house में Libra is there, जिसका कि स्वामी Venus है. It becomes the prime determinant for marriage in this horoscope. Or for all Virgo lagnas, Venus becomes the prime determinant for marriage. लग्न वाइज प्राइम डिटर्मिनेंट्स चेंज करते हैं. ठीक है, सो द सिग्निफिकेटर फॉर मैरिज इन दिस चार्ट इज वीनस सिटिंग इन द 7th in exaltation. However, the second house, which is the मूल त्रिकोण राशि of Venus, is afflicted by Ketu. केतु सेकेंड हाउस में बैठ गया है और बिल्कुल मिड पॉइंट पर बैठ गया है. मिड पॉइंट भी हम आपको समझाएंगे जब हम देखेंगे. इट इज अफ्लिक्टेड बाय केतु बाय ए क्लोज कंजंक्शन, हेंस वीकनिंग वीनस. वीनस जिस भी भाव में कोई मैलेफिक बैठ के उस भाव को अफ्लिक्ट करता है, तो उस भाव का स्वामी कमजोर हो जाता है. सो सिंस केतु इज अफ्लिक्टिंग और impacting adversely the second house, then Venus, the lord of the second house, becomes weak. The prime determinant for marriage become weak. Jupiter, lord of fourth, is in debilitation. Fourth house is an important house for marriage. Jupiter उसका लॉर्ड है और वो debilitation में है, वो नीच का है. And its मूल त्रिकोण राशि in the fourth house is afflicted by the 9th aspect of Rahu from the 8th house. राहु का 9th aspect है, 4th को देख रहा है वो. ठीक है, from the 8th. Mars, the lord of the 8th lord, 8th also plays a part in marriage. Mars उसका लॉर्ड है, 8th में ही बैठा हुआ है और वो मून को अफ्लिक्ट कर रहा है by a close conjunction. This we will study. अभी आपको मैं खाली समझा रहा हूँ कि उनकी युति है. conjunction means युति, तो मून भी खराब हो रहा है. Hence loses strength as it becomes an afflicting functional malefic planet. Mars भी कमजोर हो जा रहा है because it is afflicting. The house of bed comforts is the 12th. That is 12th house is afflicted by Rahu through aspect, by 5th aspect, thus making its lord sun also weak. The Lagna lord Mercury is debilitated. All marriage related planets are weak, as are the marriage related houses. सारे शादी देने वाले प्लैनेट्स कमजोर हैं और शादी देने वाले भाव, घर, हाउसेस आर वीक, वो भी कमजोर हो गए हैं. ओके, नाउ इन D9, that is Navansha, Venus is in the 6th. Mars is debilitated. Mercury, the D9 ascendant lord, is debilitated. So D9 भी चौपट हो गया. नवांश भी चौपट है. Navansh is a very important divisional chart of Varga chart for marriage. Okay. Native not yet married at the age of 37. Marriage अभी तक इनकी नहीं हुई है, लेकिन marriage denied नहीं है. Okay. Marriage is not denied. Exaltation of Venus, which is the prime determinant for marriage, does not deny marriage. Okay, marriage denied नहीं है. यहीं पर मैं इस चर्चा को खत्म कर रहा हूं. इसकी विस्तार में इन डिटेल वी विल डिस्कस, पॉइंट वाइज एवरीथिंग. ये जो अभी हमने आपको 5-10 मिनट में ये समझाया, यही वीडियो जब आप मेरे साथ क्लास करेंगे, यही हॉरोस्कोप वी विल डिस्कस इन हाफ एन आवर. ओके, तो एक एक पॉइंट. दिस इज हाउ आई टीच. नाउ अब हम इसको सेम हॉरोस्कोप हम केपी से देखते हैं. द सेम हॉरोस्कोप इज, ये देखिए नीचे हमने एनालिसिस थ्रू केपी कर दिया है. ओके, और ये साउथ इंडियन स्टाइल का चार्ट यहाँ कर दिया है. तो केपी में क्या हम देखते हैं, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत जिनको मालूम है, सब लॉर्ड ऑफ द 7th कस्प शादी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं. तो सब लॉर्ड ऑफ द 7th कस्प इज सैटर्न. पहली बात तो अगर सैटर्न कहीं भी अपीयर करता है, ओके,
as a significator, as a sublord in KP, तो वो डिले डिनोट करता है. प्लीज नोट, ओके, दैट इज अ जनरल रूल. सैटर्न आता है यानी कि वो विलंब. It indicates delay. Sublord of the seventh cusp is Saturn in its own star and sub. अपने ही स्टार में यानी कि अपने ही नक्षत्र में और अपने ही सब सेक्शन में बैठा हुआ है. Saturn signifies second house strongly. ये स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशन इसमें आप देखेंगे तो सैटर्न का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन है. So the and as it is sitting in its own star, so marriage is promised. But why the delay? डिले क्यों है? ये हम इसको अब केपी से देख रहे हैं, डिले क्यों है. ठीक है ना. तो क्या है इसमें देखिए, मैरिज अब देखते हैं हम. नाउ मैरिजेबल एज, ऑलवेज शादी होती है मैरिजेबल एज में. क्यों नहीं शादी हुई? मैरिजेबल एज वुड हैव कम इन सन महादशा. ये दशा चार्ट हमने, ये दशा का यहाँ टेबल दिया हुआ है. जब आदमी 20-25 साल का होता है तो शादी की उम्र अमूमन मानी जाती है, खास करके अभी इन टुडेज डे एंड एज. मैरिजेबल एज स्टार्ट्स एट अराउंड 25 these days. ओके, वैसे तो नाउ इट इज शिफ्टिंग, इट वाज गेटिंग, वो 30 हो गया, 35 भी हो गया, 40 भी हो गया. बट एनीवे हम एक वो मान के चलते हैं कि अराउंड 25 मैरिजेबल एज फॉर बॉयज स्टार्ट्स. Okay, so when marriageable age would have come in Sun Mahadasha. Sun signifies second house. Okay, but through its sublord Venus, it is strongly denies marriage, as Venus is an A-level significator of the sixth house, which is the strongest denier of marriage in any house. अगर मैरिज रिलेटेड प्लैनेट सिक्स्थ को सिग्निफाई कर रहा है, दशा अंतर दशा अगर सिक्स्थ की चल रही है, दशा अंतर दशा, या अगर वो सबलॉर्ड है, किसी मैरिज गिविंग प्लैनेट का सबलॉर्ड होकर के सिक्स्थ को करता है, तो ये इट ओवर रूल्स द सन सिग्निफिकेशन ऑफ द सेकंड हाउस. जब सिक्स्थ आ जाता है तो मैरिज डिनायल पक्का हो जाता है. ओके, तो मैरिज सन में इनकी शादी नहीं हुई. सन इनका कब खत्म हुआ? 2010 में. ठीक है, बाय दैट टाइम ही वुड हैव बीन 20s में, 20s 30s में रहे होंगे. एनीवे, अभी इनका डेट ऊपर दिया हुआ है, मैं भूल रहा हूँ. नेक्स्ट मून की महादशा 2010 से 2020, 10 साल. ओके, इसमें भी शादी नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? नेक्स्ट के मून महादशा फ्रॉम 2010 to 2020 for a good 10 years. Moon strongly signifies sixth house, both at the star and sub level, as it is in the star of and sub of Venus. Venus हम पहले देख चुके हैं. Venus signifies sixth house very strongly. So Venus, which is an A level significator of the sixth house. तो मून भी सक्षम नहीं रहा शादी देने के लिए. मून was as the dasha lord, it is vehemently denying marriage. So इनके 10 साल शादी नहीं हुई. Presently Mars oblique Jupiter is running up to November 2022. Up to November 2022, marriage will take place in this period. Marriage will take place in this period. Mars is in the seventh without any planets in its star, so strongly signifies the seventh. Jupiter, the sub-period lord, signifies seventh at the stellar level and second through its sublord Saturn. Note that Mars also signifies sixth through its sublord Mercury, but as it is also a very strong untenanted significator of seventh, it will not stop marriage. इसको हम और डिटेल में बहुत समझेंगे जब हम आप मेरे साथ क्लास करेंगे, तो कैसे एक एक प्लैनेट, एक एक सिग्निफिकेशन, अनटेनेंटेड का मतलब क्या होता है, सबलॉर्ड क्या चीज है, आपने सुना होगा, और ये सब हम पढ़ेंगे. ये मेरा एक डेमो वीडियो था. ओके, दिस इज जस्ट अ डेमो वीडियो for just to give you an insight into how I am going to teach you. So I'll be waiting for you to join my introductory class. Once again, मैं उसको देखिए आपके सामने ये डाल दे रहा हूँ. Free introductory class on 14th and 15th.
of May at 8:30 p.m. IST. Send me your email ID. Demo video on Vedic and KP, इसमें जो हमने अभी दिखाया on delayed marriage, अब मैंने आपके सामने पेश किया. These are my telephone number, my WhatsApp number, and my other number. You can call me and you can get in touch with me on WhatsApp. You can call me and see you at 8:30. Okay. Have a nice day and thanks for watching. Bye bye.